सब कुछ कंफर्म, एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार द्विशेट्टी। कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर मेजरमेंट सेशन। जल्दी से जल्दी ये यूट्यूब का लाइव सेशन में ज्वाइन कर दीजिए बेटा। हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है मेजरमेंट्स में बेसिक ब्रिड्जेस। ओके, ब्रिड्जेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए बेटा। सो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करो। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे AC ब्रिड्जेस एंड DC ब्रिड्जेस। So this is just a first lecture I want to discuss. Okay, so all of you get join. Good morning to one and all. Yes, everybody is clear? Hello. Yeah. Sir, I'm an EC student. I am writing gate from instrumentation also. Do I need any pre-requisite knowledge for this subject? Yes, तो basic तो knowledge तो होना है. Okay, basic knowledge तो होना है. Basic knowledge is necessary. Okay. चलो. बट आपको नेटवर्क सर्क्यूट्स, एनालॉग सर्क्यूट्स में कुछ बेसिक नॉलेज है तो ये सब्जेक्ट कवर करना मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलो माय डियर, एक बार मैं समराइज करना चाहता हूं टॉपिक्स को। सी हियर, सो मेजरमेंट्स का आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग रिवाइज करना चाह रहे हैं सो इसके पास एक ब्लूप्रिंट होना है। ऑलवेज वी शुड हैव ए सब्जेक्ट सिलेबस। सो मेजरमेंट्स में आपको मेजर टॉपिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। One is the electrical measurements, other one is the electronic measurements. Okay, electrical measurements and other one is the electronic measurements beta. So please make a note of these points. So time waste mat karna. Just in the February you are going to get the final exam. So all of you open the books and take these hints which will boost like a preparation for you. यूट्यूब क्लास లో కూడా నీ సాం electrical measurements, electronic measurements. Okay, in electrical measurements we'll get majorly the measuring instruments, my dear. We'll get the measuring instruments. Under the measuring instruments we'll be having the PMMC, moving iron, dynamometer, energy meter. These are the major things. Okay, next we are having DC bridge, AC bridges. Next we are having resistance measurement. Next we are having current transformer and potential transformer. Next we are having error analysis. Next, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स पे केवल 3 टॉपिक्स है। वन इज द CRO, अदर वन इज द Q मीटर एंड द लास्ट वन इज द DVM. सो दीज आर द मेजर एरियाज।
ये मेजर एरिया से आपको क्वेश्चंस आ रहा है। एक बार जल्दी से जल्दी ये सेशन स्टार्ट करने के बाद आप लाइव क्लास मेंटेन कर लो। ओके चल चलो all of you have noted this? Yes. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पीएमएमसी आएगा, पीएमएमसी के बाद डायनामोमीटर आएगा। ओके सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी एंड एसी ब्रिड्जेस। सो आज का टॉपिक है डीसी एंड एसी ब्रिड्जेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस ऑन द डीसी ब्रिड्जेस। डीसी ब्रिड्जेस में आपको मेजरली क्या आएगा? डीसी ब्रिड्जेस में आपको मेजरली क्या आएगा? प्लीज मेंटेन द नोट्स। यूट्यूब क्लास को भी आप सीरियस लेना है तो प्लीज। हर्षिनी वेर आर यू फ्रॉम? आकाश कहां से हो आप? I respect the time. I will give only the questions, but before the questions I just want to discuss some basic points about the circuits. Okay, basic points about the circuits. Okay, why? Because for electrical students we are getting 2 or 3 questions every year on the bridges. Okay, so what is a bridge first of all? तो ब्रिज को हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं? The bridge is a electronic circuit which is used to know the unknown, by adjusting the known. So this is the best way of defining the bridge. Suppose if you take a resistance measurement, it is used to know the unknown resistance by adjusting a known resistance.
It is used to know the unknown inductance by adjusting a known capacitance. It is used to know the capacitance by adjusting another capacitance. So it is electronic circuit, my dear. Okay, so bridges as per their supply, so they can be categorized as DC bridges and AC bridges. Okay, so what is the fundamental concept behind the DC bridge and AC bridge? See here. So these are the basic differences between the DC bridge and AC bridge. So if you see AC bridges versus DC bridges, if you check now, versus DC bridges, if you check now, what is the difference? आपको ये clarity होना है. DC bridges में आपने DC supply use करते हैं, AC bridges में आपने AC supply use करते हैं. So majorly AC supply बोलो तो it can be around 230 volts with 50 or more than that also, or sometimes in kilohertz also we can use the frequency depending upon application. Okay, so here the frequency is, yeah, आपको frequency का concept नहीं है, that frequency is equal to 0 and here different आपका frequency 0 है, so definitely आपने PMMC instrument use करना है. ये बहुत important question है. DC bridge के लिए डिटेक्टर क्या हो सकता है, क्योंकि DC bridges में आपको frequency concept नहीं है, जो कुछ आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आपको DC आउटपुट ही आएगा. सो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास एक PMMC होना है बस. नेक्स्ट, डिफरेंट डिटेक्टर्स आप यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज इन AC bridges. आप galvanometers, different galvanometers and tuned oscillators and CRO. I will give you the list of the detectors also. And here the basic condition is केवल opposite arms का resistance product match हुए तो होगा. That's it. If just opposite arms product is equal, then the bridge is balanced. If R1 R4 is equal to R2 R3, then the bridge is balanced. But here two conditions होना है. पहला कंडीशन है Z1 Z4 is equal to Z2 Z3 होना है, and the phase angle का भी summation होना है, impedance angle का भी summation होना है. two conditions satisfy होना है. All of you are there, my dear. Good morning to everybody. एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा, बीच में आप लाइव है, यूट्यूब लाइव का सेशन है ना, तो थोड़ा थम्स अप दिखाइए, थोड़ा स्ट्रीम दिखाइए, सो दैट आपको मैं आपका कमेंट्स को भी पढ़ सकता हूँ. ओके, मैं आपको कमेंट्स को भी पढ़ सकता हूँ. प्लीज मेंटेन अ प्रॉपर नोट्स. गुड मॉर्निंग. Good morning. How many of your triple E here? How many of your triple E? How many of your EC here? जो लाइव में देख रहे, how many of your triple E? How many of your EC here? एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए बेटा. Good morning. So ये है बेसिक कंडीशन. आपका प्रोडक्ट ऑफ द इम्पीडेंसेस मैच होना है. ओके, EC. ओके, EC लोग भी, आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल द EC स्टूडेंट्स विल राइट द इंस्ट्रूमेंटेशन गेट पेपर. सो उसके लिए क्लासेस बहुत यूजफुल है. वाई? बिकॉज जनरली आपका EC का सिलेबस भी वास्ट है, बट मोस्ट ऑफ ऑल EC एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट्स 90% सब्जेक्ट्स आर कॉमन. तो केवल आपको सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट्स, ये भी डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा वेटेज है मेजरमेंट्स. सो जितने लोग EC से आके इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिख रहे, ये बात एक माइंड में होना है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन में हाईएस्ट वेटेज इज देयर फॉर मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स में आपको 5 to 8 मार्क्स आर पॉसिबल. ओके, 5 to 8 मार्क्स आर पॉसिबल, ये ध्यान में रख दीजिए. ओके, चलो बेटा. सो व्हाट आर द मेजरमेंट्स वी आर गोइंग टू डू? Only resistance measurement here. Only R measurement is done in the Wheatstone bridge. But whereas in AC bridges, we can measure the resistance. We can measure the resistance. Okay. We can measure the resistance. We can measure the inductance. We can measure the capacitance. We can also measure the frequency.
we can measure the quality factor, Q factor of a coil, and we can measure the dissipation factor of a capacitor. आपको पता है ना क्या what is Q factor, what is dissipation factor. In addition to this, relative permittivity, epsilon r is equal to relative permittivity of a dielectric medium, वो भी हम measurement कर सकता है. Relative permittivity of dielectric mediums भी measurement कर सकता है. Okay, so these are the basic things. All of you clear, my dear? Shall we go for next? एक बार मुझे स्ट्रीम लाइव में आपका रेस्पॉन्स होना बेटा. आपको पता है यूट्यूब क्लास में कैसा होता है. यूट्यूब क्लास में हम आपका कमेंट्स को देखते ही हम पढ़ा सकते हैं. सो आपका इफ यू आर कंफर्टेबल देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ऑल ऑफ यू नोटेड दिस, ऑल ऑफ यू टेकन अ स्क्रीनशॉट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, डिफरेंसेस बिटवीन डीसी ब्रिड्जेस एंड एसी ब्रिड्जेस. एंड द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. So what are the detectors I am using? So what are the detectors I am using? So if you see the detectors, AC bridges के लिए detectors होना है. DC bridges के लिए केवल क्या है? DC bridge का basic detector है PMMC. तो DC bridge का basic detector है PMMC. Why PMMC? Can anybody tell me? Why PMMC only? What is PMMC? PMMC stands for Permanent Magnet Moving Coil. Permanent Magnet Moving Coil. So why will use this instrument only? Can anybody tell me? I need an answer from your side. Yes, Sriharshini. Why PMMC only? Why not other detectors? Lot of information I am giving in the form of slides, my dear. ये स्लाइड्स आपका रेगुलर लाइव क्लास का स्लाइड्स हो सकता है. आप आराम से ये स्लाइड्स को कलेक्ट करके और स्क्रीनशॉट लेके भी आपके पास नोट्स की फॉर्म में रख सकते हैं. चलो, can you tell me why PMMC only? That's my question. Why PMMC only? Why not other detectors? Good morning, Sahil. Good morning. Yeah, why PMMC only? I need an answer. Why PMMC only? My dear student, why PMMC only? The answer here is PMMC cannot measure, cannot detect AC measurements. It can detect only DC or average value. Please note down. ये भी एक expected bit है. PMMC measures only DC or average value. It cannot suitable for AC measurements. That is the reason why for DC bridges we are using this particular analysis. Okay. But when it comes to the AC bridges, in AC bridges there are different detectors and there are different frequency ranges. So these are the different frequency ranges. So if you see the frequency range, first one is the vibration galvanometer. So in vibration galvanometer, the vibration see when I say AC bridges के लिए different frequency ranges होगा. That means आपका supply के अनुसार. So different detectors are used over the different frequency ranges. So if you see vibration galvanometer, that is suitable for 2 to 100 Hz frequency. Headphone galvanometer is suitable for 250 Hz to 4 kHz frequency. Tunable amplifier galvanometer is suitable for 10 Hz to 100 kHz. CRO is suitable in the range of megahertz. So मेरा क्वेश्चन एक है, cathode ray oscilloscope is the best detector for high frequency measurements. Please make a note of these points. Can anybody tell me why the CRO can be suitable for high megahertz? Can anybody tell me what is the answer here? Why CRO? CRO is having RC network. So wherever RC network is there, so RC network, because it is having high input impedance, it offers the high input impedance. It offers the high input impedance, my dear. So इसकी वजह से क्या होगा, इसके
parallel to the CRO, we are having the impedance in the form of R and C. So आपको पता है wherever the capacitor is there, the capacitor will work majorly for high frequency elements. So that is the reason why CRO is best suitable for megahertz range. Is it clear, my dear? Harshini, Sunil, Sahil, Ashok, Alok, everybody. Yes, sir. Chalo. Now, let us go for different types of DC bridges first. So first we'll discuss the DC bridges, उसके बाद AC bridges को जाएंगे. DC bridge में क्या क्या concepts है. So DC bridge में majorly will go for Wheatstone bridge. What bridge? Wheatstone bridge. तो DC bridge में आपको पहले आता है Wheatstone bridge. One of the important topic है DC bridges में. Most important topic है Wheatstone bridge. Most important topic है Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. So if you see the Wheatstone bridge circuit, the Wheatstone bridge is a combination of resistors, 4 resistors, and we are using a DC supply. Okay, so these are DC, always remember. And there is a resistor here. This is the R1. Let us take this is R2, this is R3, this is R4. So if you see here, this is our detector, DC detectors. Okay, so this is our basic circuit of Wheatstone bridge, A, B, C, D. Okay, so here it can be, you can also take in some of the books, we can take this as PQRS also, PQRS, like that also we can take. Okay, is it clear? PQRS. So what is the basic working of Wheatstone bridge? Wheatstone bridge can work in 2 modes. One is the null mode, other one is the deflection mode. In short, I am discussing, my dear, it is a crisp class है, it is not a comprehensive class, crisp class है. crisp में आपको important concept देता हूँ, उसके बाद जल्दी से हम problems को जाएंगे. Comfortable है सब लोग? Yeah. Very good, nice. So deflection mode है and और एक है null mode. In null mode, what we are doing now, we want to know the unknown component. So this R is the unknown component. So this S is the standard. This R we don't know. This component we have to know. So by adjusting this S, we can find out this R component. Okay. First, initially what I will do, I will make this. Whenever this unknown component comes here, what happens? Here, the DC bridge will show some unbalance. Okay, so what is the basic balance condition? If you see the basic balance condition, just if you apply the KVL or current division, you can solve. This is I1, this is I2, my dear. So if the galvanometer is having infinite input impedance, it is having infinite input impedance, this current cannot enter here, so the same current will go here. So these 2 resistors are in series and these 2 resistors are in series. Okay, so there is no current path here.
This is possible if and only if the meter resistance is infinite. So this is an ideal condition my dear, but when it comes to practical ना, practically आपको कुछ फर्क पड़ता है, आपका मीटर का impedance भी आएगा. Is it clear my dear? Yes, नीरज, very good. So जितने लोग लाइव में हैं, so here this condition is possible. So अगर आपको null mode में देखे तो क्या करना है, हमको R3 चाहिए, this is a standard resistor, आपको R3 का वैल्यू पता नहीं है. By adjusting this resistor somewhere the bridge is going to get balanced. Once the bridge is balanced by using the balance condition, so in the null mode we are using the balance condition. In null mode we are using the balance condition. So what is that balance condition? So first we can take the balance condition by using the potential difference. Suppose if I am taking the at null mode at bridge balance by adjusting yes standard resistor, make the bridge balance, make balance, so that the detector shows 0. The detector shows 0. When detector shows 0, the potential difference between VB and VD, VB minus VD is equal to 0. That means VB is equal to VD. So what is VB? VB I can take it as I1R2 plus VC is equal to, this is I2R4 plus VC. So VC gets cancelled. So I1R2 is equal to I2R4. What is I1? I can write I1 as Vs by R1 plus R2 into R2 divided by, this is Vs by R3 plus R4 into R4. The Vs also gets cancelled. So now if you achieve the balance condition my dear, so what is the balance condition? R2 by R1 plus R2. So if you check now, if you see the balance condition kya hoga? So this R2 by R1 plus R2 is equal to R3 by R3 plus R4. So if you make some cross multiplication my dear, here if you take some cross multiplication, so what you are going to get, R2 R3 plus R2 R4 is equal to R1 R3 plus R2 R3. Okay, so this R2 R3 gets cancelled. So now what is the bridge balance condition? R1 R2 R3 plus R2 R4. I think we have done a mistake here. Yeah. R4 by na, mistake here. This is the printing mistake. Okay, so this is R4. So if you take this as R4, then this correction if you can take it. So what is the things here we are going to get? So R2 R3 plus R2 R4 is equal to R1 R4 plus R2 R4. Okay, so now what is the condition we got? R1 R4 is equal to R2 R3. So this is a bridge balance condition. The product of opposite arms must be equal. So यहाँ से आपने okay बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का बैच कब शुरू है? Okay, so this is the concept. This is a bridge balance condition. Okay, so this is one method. All of you clear? Now from this we can find out the unknown. क्या है अननोन हियर? आपने ये एस को एडजस्ट करते जा रहे, आपने एस को एडजस्ट करते जा रहे, पी क्यू आर एस. सो पी इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर. सो पी इंटू एस, और एक कंडीशन भी ले सकते हैं, पी इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर. सो आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस. एम आई राइट और नॉट? ऐसा भी आप लिख सकते हैं.
सो आपको ये पता होना है, हमको अननोन क्या है, इधर अननोन है r, सो ये अननोन है r, उसको एडजस्ट करने से आपको ये s को एडजस्ट कर रहे, सो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग, यू नो द p वैल्यू, यू नो द q वैल्यू, यू हैव एडजस्टेड द s वैल्यू सो दैट द ब्रिज हैज बिकम बैलेंस्ड. इनिशियली ब्रिज बैलेंस में नहीं था, एक अननोन रेसिस्टर R को अटैच कर दिया, ब्रिज में आपको डिफ्लेक्शन मिला, वो डिफ्लेक्शन को अगेन बैलेंस करने के लिए, वो डिफ्लेक्शन को नल करने के लिए आपने क्या किया, S को एडजस्ट कर दिया. एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ S द ब्रिज बिकम बैलेंस. नाउ टेक द वैल्यूज ऑफ P, Q एंड S, आपको R मिलेगा. क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल. नाउ when you are going for the deflection method, if you are going for the deflection method, my dear, in deflection method, suppose the bridge is not balanced. If the bridge deflection method में आपको bridge balance नहीं है, that means what? The VB minus VD is not equal to 0. Then what happens? The VB is equal to VD होता है. So what is VB, my dear? VB is equal to I1 into R2 है, and VD is equal to what? I2 into R4 है. So V1, I1 can be written as Vs by R1 plus R2 into R2 है. ये क्या है? Vs by R3 plus R4 into R4 है. So if you take this common, so is not equal to 0 ना? It is not equal to 0. So what I can write? So VB minus VD निकालना है. So VB minus VD कैसा निकालना है? तो आप लिख सकते हैं VB minus VD कैसा निकाल सकते हैं? VB minus VD कैसे निकाल सकते हैं बताओ? So this is I1 into R2 minus this is I2 into R4. So what is I1? This is Vs by R1 plus R2 into R2 minus Vs by R3 plus R4 into R4. So now the V bridge, if you take the V bridge, if you take Vs, if I take common, this is R2 by R1 plus R2 minus R4 by R3 plus R4. All of you clear, my dear? So this is the bridge formula. Please make a note of this. This is a bridge formula. This is the basic concept. Or simply we can say, whenever you find the bridge, आपको voltage division apply करना है. Voltage division बोलते क्या है? These two components are series. R2 by R1 plus R2 minus R4 by R4 plus R3 हो जाएगा. Is it clear, my dear? सो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं. सो मुझे क्या आ गया? सो वी ब्रिज का फॉर्मूला आ चुका है. सो वी ब्रिज का फॉर्मूला से मैंने कुछ एक्स्ट्रा निकल कर सकता हूँ. सो वी ब्रिज में क्या आ गया? सो वी ब्रिज इज इक्वल टू Vs इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस R4 बाई R3 प्लस R4. ये है हमारा बेसिक टॉपिक. सो नाउ suppose if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R, then क्या होगा? The V bridge will be 0 होगा, balance. Suppose if any one of the resistance is changing R plus or minus delta R, then V bridge क्या होगा? Can anybody tell me what is the answer for this? आप सॉल्व करके बताइए जल्दी बेटा, जल्दी आप सॉल्व करके बताइए. Sriharshini, we are going to solve, don't worry. Just first class है ना, we are going to solve. Yes, we are going to solve. I don't want to make it only completely theoretical. We are going to solve. कहाँ से हो आप श्रीहर्षिनी? आंध्रा, तमिलनाडु? Please tell me what is the formula. If I am taking any one of the resistance is changing. Harshini, Hyderabad, very good. Telugu. Please tell me the expression. So this is one of the important expression. So if I am taking the V bridge expression, so what is the V bridge expression? The V bridge can be taken as Vs into what is R2? R2 we don't know R. R1 is equal to R plus delta R plus R minus R by R plus R. So if you take this, this is Vs, this is R by 2R plus delta R, this is minus 1 by 2. So if I am solving this, I am going to get this as 4R plus
2 delta R, this is 2R minus 2R minus delta R. 2R gets cancelled, so Vs into minus delta R by 4R plus 2 delta R. Majorly this 4R will be greater than 2 delta R, so obviously we can take the magnitude of the V bridge. Suppose bridge cannot be negative voltage, so if you take this will be Vs into delta R by 4R. So we can say this as the quarter bridge expression, Vs by 4 into delta R by R. So please make a note of this formula. Expected hint है, and इसके लिए condition क्या है? If and only if this meter resistance must be infinite. Second condition is all initial resistors must be same initially. Noted? Chalo. Let us go for a question now. Try to answer this question. Make it fast. ये क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना है? द आउटपुट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स 1 and 2 इज आस्किंग. सो कैसा सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को? So how to solve this question? So if you short this particular circuit, then what happens? This 20k and this 30k, this is 20 kilo ohms, this is 30 kilo ohms, will be parallel, and then these two are also in parallel. So this is 25k and this is also 25k. So what is the answer? So now it will be the R equivalent you can calculate. This is 20 into 30 divided by 20 plus 30, 50 plus this is 12.5. Okay, so 60 by 5, 12 plus 12.5. So the answer is 24.5 kilo ohms. The right answer goes to 24.5 kilo ohms. This is the R equivalent. How many of you answered 24.5 kilo ohms is the right answer? What happened here? I'm expecting an answer from you, live class. Nobody is answering here. All of you are there? IIT मद्रास का क्वेश्चन है, 2003 में आ चुका है IIT मद्रास का. चलो, let us go for a next question. IIT Bombay 2013 का सवाल है. A strain gauge forms one arm of the bridge shown in the figure below, and it has a nominal resistance without any load as 300 ohms. So what is the value? So this is 300 ohms. Other bridge resistances are 300 ohms. So initially these all are same. So this is 300, this is 300, this is 300, this is 300 initially.
The maximum permissible current through the strain gauge is 20 milliamperes. So this I max is 20 milliamperes. Maximum permissible current is 20 milliamperes. Strain gauge resistance increased by 1%. So delta R in strain gauge is 1% of nominal value. What is the nominal value? 300. So this is 1% of 300. 1% of 300 means that will be 3 ohms. So please solve, try to solve this question. All of you are there? All of you are there? मुझे एक बार रिस्पॉन्ड दीजिए बेटा. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार रिस्पॉन्ड दीजिए. Are you able to solve the questions? Previous question, are you understanding? Yeah. Now try to answer this question. I'm 2 minutes break. Five minutes now. 5 minutes.
Are you able to answer? What is the answer, my dear? May I know the answer, please? Anybody have solved this question? Anybody have solved this question? A strain gauge forms one arm of the bridge shown in the figure below and has a nominal resistance without any load as 300 ohms. Other bridge resistances are R1 are equal. So first of all, you have to understand, in this question, the supply voltage is not given. How many of you solved this question, my dear? No response came here. Nobody has responded me. Nobody has given the answer. Arshini, what is this value? Is the supply voltage is given in this question? No. So first of all, you have to calculate the supply voltage. Supply voltage कैसे calculate करना है? आपके पास resistors का information है, and the maximum current is 20 milliamperes following through this particular branch of RS. So here 20 milliamperes बोलो तो here कितना होगा? Here भी 20 milliamperes होगा. Why? Because when the bridge is under balanced condition, initially all the resistors are equal, 300, 300, 300. So 20, 20 maximum current is distributed. So what is the current total here? The total current will be 40 milliamperes. So the total current is 40 milliamperes. Then you can calculate the supply voltage. जितने लोग लाइव में है मुझे एक बार thumbs up दिखाइए बेटा. जितने लोग लाइव में है मुझे एक बार thumbs up दिखाइए. आपका response बहुत important है लाइव क्लास में. Anybody solve this question? See, I have given a 5 minutes of time. In a 5 minutes of time, you are not able to solve. What is the problem? You should give some comment. Kamal Pratap Singh. So just I went to drop my daughter. So that is the one. तो आपको Vs को निकालना है. Vs को निकालने के लिए क्या करना है? एक बार ध्यान से देखिए इधर. Vs को निकालने के लिए क्या करना है? ये ब्रिज सर्किट को एज इट इज दीजिए. So this is 300 ohms. This is 300 ohms. This is 300 ohms. This is 300 ohms. So 300, 300. This is 300. This is 300. Okay. So अभी क्या होगा? ये सप्लाई वोल्टेज हमको निकालना है. तो हमको सप्लाई वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या होना है इधर? सो यहाँ से को Imax आना है. सो दिस इज Imax. सो Imax इज 40 मिली एम्पियर्स. सो हमको ये सप्लाई वोल्टेज पता नहीं. सो दिस टू रेजिस्टर्स आर इक्वल 600 600 600 600 parallel. So what is the equivalent resistance of this circuit? So if you see the equivalent resistance of this circuit, the equivalent resistance of this circuit will be what? This R equivalent. So this will be 300 ohms. So 300 ohms will be the equivalent. So this is the 40 milliamperes current. So the supply voltage Vs अब निकाल सकते हैं. So Vs is equal to I max, I total. Okay. So I total into R. So that is 40 milliamperes into this is 300. So that is going to come as 12 volts. So ये है हमारा 12 volts का आंसर. फर्स्ट स्टेप हो गया. ओनली एक थम्स अप दिखाया जितने लोग हैं लाइव में. ओके. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो डेल्टा. तो डेल्टा कैसा निकालना है? तो डेल्टा को कैसा निकालना है बताओ? तो डेल्टा कैसा निकालना है? डेल्टा इज ऑलरेडी गिवन हियर. सो व्हाट इज द नेक्स्ट फेज ऑफ द सर्क्यूट? इफ यू सी द नेक्स्ट फेज ऑफ द सर्क्यूट माय डियर, सो दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ द सर्क्यूट. सो वन ऑफ द रेजिस्टेंस चेंजेस बाय डेल्टा आर. Okay, if you see the next phase of the circuit like this, so now you got the supply voltage. So what is the supply voltage, my dear? Supply voltage is a 12 volts. So here the supply voltage is a 12 volts. So this is the supply voltage. The supply voltage is the 12 volts. So now this is our strain gauge R plus delta R. So this is R, this is R, this is R. So now what is the bridge voltage is asking. So this is how to solve. Already हमने फॉर्मूला प्रूव किया. So V bridge का आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? That is Vs by 4 into delta R by R. So supply voltage 12 volts आ गया.
delta R is already given as 1% of RS. 1% of R means 1 by 100 of 300. So the answer will be 3 ohms. So if you substitute this, this is 3 and this is 300. तो क्या होगा, हमको आंसर मिलेगा 0.03 होगा. That means it will be 30 millivolts approximately. So approximately 30 millivolts, क्योंकि there actually the formula is Vs into delta R by 4R plus 2 delta R. This is the actual formula. Okay, this was the actual formula, but we are converted into this by adjusting the 4R. Is it clear, my dear? So हमको V bridge मिला है. So this is the right answer. So correct option in this question goes to option C है. 29.85 is the right answer. Sachin, very good. So let us go for next question. All of you clear? Anybody any doubts, you can ask me here. So one more question we will do on the Wheatstone bridge. उसके बाद हमने AC bridges को जाएंगे. Try to solve this question. This question is a combination of Wheatstone bridge and error analysis. This question is a combination of Wheatstone bridge and error analysis. Try to solve this question. IIT कानपुर 2015 का सवाल है. When the Wheatstone bridge shown in the figure is used to find the value of resistor Rx, so this is the value of resistor Rx. The galvanometer G indicates zero current when R1 is equal to 50 ohms. So this R1 was 50. So this R1 was 50 ohms and R2 is 65 ohms. Next, R3 is 100 ohms. And if R3 is 100 ohms. If R3 is known with plus or minus 5% tolerance on its nominal value of 100 ohms, what is the range of Rx in ohms? So first of all, balance condition क्या है? What is the balance condition here? R1 Rx. What is the balance condition? Try to solve, man. R1 Rx is equal to R2 R3. So we need the R1. So its question is related to combination of bridges and error analysis. Can anybody tell me the answer here? So how to solve this? So here this R1 into Rx is equal to R2 into R3. So हमको Rx चाहिए. So product of opposite terms R1 Rx R2 R3. Rx is equal to R2 by R3 by R1. So here what is given? He has given that R2 65 है, R1 R2 R3 by R1. So what is R2 value? R2 value he has given as R2 65 R3 100. So this is 65 into 100 divided by R1. What is R1? That is 50. But here this R3 he has mentioned clearly as plus or minus 5%. Plus or minus 5%. So क्या करना है अभी देखो. So simple यार, it can be two values. R3 is equal to 100 plus or minus 5%. That's what very clearly has given. What is the range of R3? So this very simple question, ये question को भी आप क्यों आंसर नहीं दे रहे भैया, ऐसा नहीं तो कहीं में नहीं चलेगा. So R3 is known with plus or minus 5%. ये very simple question. So 100 plus or minus 5 बोलो तो क्या है 100 plus or minus 5 by 100 of 100. So it will become 100 plus or minus 5. So 100 plus or minus 5 means what? It will be 95 to 105. So you take 95, you will get one answer. So Rx is 65 into 95 by 50 और एक आंसर क्या है? Rx is equal to 65 into 105 by 50. Please tell me what is the value. At least you answer this. Answer क्या आ रहा है? So 65 into 95 divided by 50. So 123.5 आ रहा है इधर. So this is coming as 123.5
Next, this is 65 into 105 divided by 50, so it is coming as 136.5. This is coming as 136. Okay, so 125 point, option A is the right answer. Clear all of you? Is it clear? Chalo. Now let us go for the AC bridges. Let us go for the AC bridges. The next topic I am going to discuss is the AC bridges. So next topic is AC bridges. AC bridges में आपको बहुत सारा लिस्ट है. So AC bridges में ये है हमारा लिस्ट. Please listen. Here एक important बात है AC bridges में. AC bridges में एक important बात है. Most of all the cases AC bridges में आपको theory questions आने की chances ज़्यादा है. AC bridges में आपको क्या आता है? theory questions आने की chances ज़्यादा है. Inductance measurement के लिए क्या use करते? Capacitance measurement के लिए क्या use करते? Okay. So certain cases. So first of all we have what are the bridges? Okay. So let me give you one clarity about here. AC bridges का list क्या क्या है? So the first bridge is the Maxwell inductance bridge. Maxwell inductance bridge. Maxwell inductance bridge. Second one is the Maxwell inductance capacitance bridge. Maxwell inductance capacitance bridge. Okay, next. Third one is the ACE bridge. Next, fourth one is the Anderson bridge. Next, fifth one is the Owens bridge. Next, sixth one is the DeSauty bridge. Next, seventh one is the Sharing bridge. Next, last one is the Wien's bridge. Okay, so these are the list of the bridges. Response दीजिए बेटा. Okay, response देना है. So Maxwell inductance bridge, Maxwell inductance capacitance bridge, Hayes bridge. So इसके ऊपर भी आपको theoretical questions आने की chances बहुत है. So what are the theoretical questions we are going to get here? So let me explain you the theoretical questions. These all are suitable for the measurement of inductance and capacitance. If you see,
Maxwell inductance bridge, it is suitable for self-inductance of a coil. Maxwell inductance bridge, capacitance bridge also self-inductance of a coil. Hayes bridge also self-inductance measurement of a coil. Anderson is also self-inductance. Owens bridge also self-inductance. Then difference kya hai? See here, the difference here is, here inductance of an unknown coil is measured by comparing with a known coil. Whereas in Maxwell inductance capacitance bridge, inductance of an unknown coil is measured by comparing with a known capacitance. That is the only difference. So both the Maxwell bridges are for inductance measurement only, whereas the first one measures the inductance based upon the comparison of known inductance, as the second one measures the based upon the comparison of the capacitance. Is it clear, my dear? Next. So, but the thing here is, they are suitable for the coils whose Q factor is greater than 1, less than 10. That means they are suitable for medium Q factor only. They are suitable for medium Q factor only. Medium Q factor. Make a note of these points. ये कैसा remember करना है? I will tell you a technique. Maxwell का first letter M है and medium Q factor का first letter भी M है. So आप ऐसा याद कर सकते हैं. So Maxwell bridges दोनों are suitable for medium Q factor measurement. Is it clear? Maxwell bridges are best suitable for medium Q factor measurement. Please thumbs up दिखाइए बेटा. Live class, ये YouTube का live class चल रहा है, आपको कुछ information देना है. Next, Hayes bridge also for Q factor more than 10. This is also Q factor more than 10. Okay, so एक ऐसा remember करना है, higher Q factors. So this I can remember as higher Q factors, and it is going to give accurate measurement. Okay, so how to remember this? इसका first letter A है, so A से आपको accurate आ गया. Okay, ऐसा भी आप remember कर सकते हैं. Okay, ऐसा भी आप remember कर सकते हैं. Accurate measurement है. Understood? Next, Owens bridge में ओवन ये भी माइक्रोवेव ओवन की तरफ से इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए डेल्टा एल कैन बी इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग. सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर. एक्चुअली ये क्वेश्चंस आ चुका है गेट में, बार बार थ्योरी क्वेश्चंस आ चुका है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है एसी ब्रिजेस में, क्योंकि ही विल गिव सम सर्किट में Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 अप्लाई करके हम कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस में ये बहुत दिक्कत होगा. So Owens bridge is suitable for self-inductance measurement, where I can increase or I can decrease the inductance. Incremental or decremental inductance measurement के लिए use होगा. Next comes the DSRT bridge. DSRT bridge is for capacitance measurement, and it is also suitable for dissipation factor measurement. It is also suitable for what? Dissipation factor. It is also suitable for dissipation factor measurements. Sharing bridge is also for capacitance measurement. In addition to that, it is also suitable for dissipation factor measurement. It is also suitable for relative permittivity measurement, epsilon r. Okay, it is suitable for capacitance measurement, dissipation factor measurement, and relative permittivity measurement. Next, Wien's bridge, as the name stands, the Wien's bridge is suitable for frequency measurement. All of you clear, my dear? Okay. Chalo. Now let us solve a question directly. So this is the basic circuit of AC bridge. In AC bridge and DC bridge, this is the circuit difference. So you can see the circuit difference. In DC bridge, we are using the DC supply and we are using the DC detector. DC bridges में majorly resistors होता है R1, R2, R3, R4. Whereas AC bridges में क्या होगा? AC bridges में लिए आपको impedance रहेगा Z1, Z2, Z3, Z4, and AC bridges में आपको basic concept है opposite product of impedances must be equal. Z1, Z4 must be equal to Z2, Z3. Next, so first let us see the Maxwell inductance bridge. In Maxwell inductance bridge, we are using the test coil. So this is the test coil, my dear. So this is the test coil. So the test coil is having test coil means coil will be having, it cannot be pure inductor. So it can be a combination of resistance also.
So this is L1 and this is R1. Okay, L1 and R1 total. So we have to find out these values of L1 and R1. Unknown inductor plus j omega L1 and R4, Z2 is R2 plus j omega L2. अगर आपको सिंप्लीफाई करें तो आपको कुछ एक्सट्रैक्शंस मिलेगा. The unknown resistance R1 is equal to R2 R3 by R4 and unknown inductance L1 is equal to L2 into R3 by R4. So हमको टेस्ट कंपोनेंट्स आ गया. So आपको L1 मिला है एंड आपको R1 मिला है. So अगर Q फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, Q फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा L by R. So ओमेगा L1 इज इक्वल टू R2 R3 by R4 एंड सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या आ रहा है. देखो टेस्ट कॉइल इज दिस, बट टेस्ट कॉइल का जो कुछ Q फैक्टर है इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ inductance. So Maxwell inductance bridge measures the unknown inductance by known inductance, known inductor parameters. Okay, so this is the basic concept of Maxwell inductance bridge. Clear hai? Next, let us go for the next bridge, Maxwell inductance capacitance bridge. So if you see the Maxwell inductance capacitance bridge, everything is same. Okay, but here आपको क्या है ना, टेस्ट कॉइल का इंडक्टर मेजरमेंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल कैपेसिटर एंड रेसिस्टर यूज कर रहे. सो दिस इज द C4 एंड दिस इज द R4. ओके, सो दिस इज L1 R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज द वेरिएबल कंपोनेंट्स. सो ये एडजस्ट करके हमने टेस्ट कॉइल का पैरामीटर्स हम मेजरमेंट कर रहा है. सो इन मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हमने टू मेजर द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमने नोन इंडक्टेंस को कनेक्ट कर दिया. इन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में अपने इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एक कैपेसिटर का पैरामीटर एडजस्ट कर रहे हैं. सो देखो यार Z1 हमारा टेस्ट कॉइल है. सो दिस अवर टेस्ट कॉइल. सो टेस्ट कॉइल ये है, दिस इज द इंडक्टर एंड दिस इज द रेसिस्टर. सो दिस इज द टेस्ट कॉइल. टेस्ट कॉइल का दिस इज L1 एंड दिस इज R1. ओके, सो Z2 इज अ नॉर्मल रेसिस्टर, Z3 इज अ नॉर्मल रेसिस्टर, Z4 में R4 C4 पैरेलल में है. सो R4 एंड 1 बाई j omega C4 पैरेलल. सो Z4 का एक्सप्रेशन ये हो गया, R4 बाई 1 प्लस j omega C4 R4 हो गया. सो बैलेंस कंडीशन निकाल के हमने डेरिवेशन करेंगे. सो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का डेरिवेशन ये आ चुका है. R1 plus Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. So Z1 is the test coil, ये है हमारा टेस्ट कॉइल. R1 plus j omega L1 एंड सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिला है, L1 का वैल्यू आ गया. L1 is equal to R2 R3 C4. ओके, एंड R1 का वैल्यू भी मिला है. सो R1 का वैल्यू है R2 R3 by R4. सो एक बार L1 R1 का आने के बाद Q फैक्टर ऑफ द टेस्ट कॉइल आपको मेजरमेंट करने के लिए ओमेगा L1 R1 यूज कर सकते हैं. ओमेगा L1 R1 से आपको Q फैक्टर को निकाल सकते हैं. ओके, Q फैक्टर को निकाल सकते. बट हैव यू एडजस्टेड हियर व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस L1 एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट द R1 वैल्यू, आपका जो कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं दे आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर. सो हियर व्हाट इज द डिफरेंस? आई कैन राइट मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. Maxwell inductance capacitance bridge measures the unknown coil's inductance by comparing the capacitance by comparing with the capacitor. That's why this is not suitable for higher Q factors. Why? Because higher Q factors के लिए C4 भी higher होना है. Practically speaking, designing of a
कैपेसिटर विच इज हायर वैल्यू ज्योमेट्रिकली वेरी डिफिकल्ट है. अगर C4 ज्यादा होना बोले तो एप्सिलॉन A/D ज्यादा होना है. दैट मीन्स इसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होना है. आपने द बिगेस्ट ओवरलैपिंग एरिया यू हैव टू ब्रिंग इट. सो दीज आर द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर मीडियम Q फैक्टर. सो इट इज सुटेबल फॉर 1 to 10. Understood? So these are the baser points. Chalo, let us go for the next bridge. So this is the concept. Next I am going for the Hayes bridge. So if you see the Hayes bridge is majorly suitable for measurement of self-inductance of the coils whose Q factor is greater than 10. एक ही केवल डिफरेंस है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में फोर्थ ब्रांच में R4 एंड C4 पैरेलल में हो जाएगा, इधर ये सीरीज में हो जाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. रिमेनिंग डेरिवेशन पार्ट आप कर सकते हैं. ओके, सो हेस ब्रिज का भी हमने कॉन्सेप्ट्स दिया है. सो आपको वैल्यूज आएगा. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ब्रिज है हेस ब्रिज का, डेरिवेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड है. Okay, let us go for the next Anderson bridge. Anderson very interesting. It is a 5-point bridge. 1 2 3 4 5. So it is a 5-point bridge है. So आपने self inductance measurement कर रहे. So self inductance measurement is कर रहे by fixed capacitor. So if you see there is a conversion here. हम लोग एक डेल्टा मॉडल है, ये डेल्टा मॉडल को स्टार मॉडल में कन्वर्ट करना है. ओके, सो ये सर्किट का एंडरसन का एक्यूरेसी अच्छा है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी मोर है. अगर ध्यान से देखो तो अदर आर्म्स में आपको 4 आर्म्स का ब्रिज है अभी, लेकिन 5 आर्म्स का ब्रिज आ गया. सो उसको कन्वर्शन करना है, डेल्टा टू स्टार मॉडल में कन्वर्शन करके करना है. सो एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएगा बट क्यू फैक्टर आपको लेस देन 1 हो जाएगा. क्यू फैक्टर आपको लेस देन 1 हो जाएगा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट, दिस इज अबाउट एंडरसन ब्रिज. एंडरसन के बाद ये पूरा कन्वर्शन करना है, इसमें इंटरनली कंपोनेंट्स को कन्वर्शन करना है एंडरसन का. आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दिस डेरिवेशन पार्ट. व्हाई? बिकॉज दिस डेरिवेशन पार्ट इज जस्ट वर्किंग ऑफ द एंडरसन ब्रिज. ओके, चलो लेट अस गो फॉर सम क्वेश्चंस नाउ. आंसर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का आंसर बताइए. मैच द फॉलोइंग विद मेजरिंग इक्विपमेंट विद द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. IIT मद्रास 1991 का क्वेश्चन है. I need an answer from your side. I need an answer from your side. I'm expecting answers. जो जितने लोग लाइव में हैं एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए बेटा. कमल प्रताप सिंह, आकाश चतुर्वेदी, सचिन. चलो, what is the answer here? The Kelvin double bridge, Wien's bridge, sharing bridge, Maxwell's bridge, capacitance, self inductance, frequency, low resistance. ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सो केल्विन डबल ब्रिज में आपको लो रेसिस्टेंस के लिए सुटेबल है. ओके, वीन्स ब्रिज भी फ्रीक्वेंसी के लिए सुटेबल है. एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू द W स्टैंड्स फॉर ओमेगा. ओमेगा मीन्स आपने फ्रीक्वेंसी के लिए जा सकता है. शेयरिंग ब्रिज भी आपको कैपेसिटेंस के लिए सुटेबल है. मैक्सवेल ब्रिज के लिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सुटेबल है. सो व्हाट इज द राइट आंसर वी आर गोइंग टू गेट? द P गोज टू 4 एंड द Q गोज टू 3. नेक्स्ट द R गोज टू 1. नेक्स्ट द S गोज टू 2. सो 4 3 1 2 is the answer. Option C can be the right answer for this question. Option C. जितने लोग लाइव में कुछ रिस्पांस तो दीजना पड़ेगा. ओके.
चलो let us go for the next question. So ये क्वेश्चन देखो, a Kelvin bridge is best suitable for the measurement of dash. ये IIT कानपुर 1995 क्वेश्चन है. Kelvin bridge is best suitable for low resistance measurement or less than 1 ohm. Next question. Actually ये this question is for instrumentation student. Metal strain gauge has a gauge factor of 2. The gauge factor is 2. Its nominal resistance R is a gauge factor is equal to 2. Its nominal resistance. So what is given here? This question is actually, it's not a triple E question, it is an instrumentation question. It is an instrumentation question. Instrumentation branch का question है ये. Okay. So a metal strain gauge has a gauge factor of 2. So the gauge factor is 2. A nominal resistance is 120 ohms. So this R is equal to 120 ohms. Next, undergoes a strain of 10 power minus 5. So strain is equal to 10 power minus 5. This is 10 power minus 5. The value of change of resistance in response to the strain is what? Delta R पूछ रहे हैं. Actually ये gauge factor का formula से आएगा. So gauge factor is equal to electrical strain by mechanical strain. This is electrical strain by mechanical strain. So electrical strain is decided as delta R by R. Mechanical strain is delta L by L. Delta R by R by delta L by L. Okay, so now you can start this answer. So the delta R we don't know. The gauge factor is equal to 2 is given. So the gauge factor is given as 2. The delta R we don't know. The R is equal to, so आप calculate कर सकते हैं ना delta R का value. So what is the value? So this is gauge factor into delta L by L into R is equal to delta R. So solve कर सकते हैं जो कुछ value दिया. All the multiplication 240 into 10 power minus 4, 240 into 10 power minus 5. चलिए ये आंसर गलत है ना. 2 into 120, 240, 240 into 10 power minus 5. 240 into 10 power minus 5 means 24 into 10 power minus 2.4 into 10 power minus 3. Option C is the right answer. Option C will be the right answer for this question. So let us go for the next question. Try to answer this question. Match the following. What is the answer for this question? एक क्वेश्चन का आंसर बताइए. If you see this question, Wien's bridge में क्या क्या है? Wien's bridge में क्या आएगा? Wien's bridge is Maxwell bridge, Shearing bridge, Anderson bridge, Blumen's bridge. Measurement of resistance, high Q inductors, measurement of frequency, high voltage capacitors, low Q inductors, insensitive to electrostatic field. So first of all, Wien's bridge is suitable for frequency measurement. So it will go for R. So A goes to R. So A goes to R. Next, Maxwell bridge. Maxwell bridge is suitable for inductance measurement. Shearing bridge is suitable for capacitance measurement. So C goes to S. So C goes to yes. Next, Anderson bridge is for Maxwell. Maxwell bridge is for actual medium, but in the given thing it will go for this. So B goes to Q. Next, Anderson bridge is for low. So D goes to T. So RQST, RQST U. So this is for U. Sometimes we don't know, some of the unknown bridges also is possible to get. So RQSTU. So RQSTU. The right answer.
Option A is the right answer. Okay, option A is the. Now let us go for another question. So this question देखो बार बार repeat हो चुका है. Kelvin double bridge is best suited for the measurement of low value of capacitance, resistance of a very low value. So option A is the right answer. Next. So try to answer this question. IIT Madras. The items in group 1 and items in group 2. So he has given. So how to answer this question? Try to solve this question. Resistance in the milliohm range, low values of capacitance, comparison of resistances which are nearly equal, inductance of a coil with a large time constant. So resistance in the milliohm range means it goes to this one. So P goes to 2. P goes to 2 पक्का. Next, low value of capacitance. Capacitance का related हमारे पास Hayes means sharing bridge है. So Q goes to 3. Q goes to 3. Next, comparison of resistance which are nearly equal. This is carry fastest bridge. So this is carry fastest bridge. Carry fast is also one type of DC bridge which is suitable for the measurement of small resistors. Next, inductance of a coil with a large time constant. This question you have to understand. Time constant ज़्यादा है. That means L by R is more. If time constant is more means L by R is more. Okay. So that means Q is equal to omega L by R. That means if L by R is more means automatically Q factor is also more na. So it is asking inductance of a coil with higher Q factor. Higher Q factor means it goes to Hayes bridge. So the right answer is 5. So very tricky here. So PQRS, P goes to 2, Q goes to 3, R goes to 6, S goes to 5. So 2, 3, 6, 5. So option A is the right answer. Okay, option A will be the right answer. Is it clear? Chalo, let us go for the next question. Try to solve this question, numerical question. This question dekho. The AC bridge is shown in the figure is used to measure the impedance Z. Okay, so this is the test coil. So try to understand, this is the test coil my dear. So a test coil का value पता होना है, कैसा calculate करना है test coil का value. Okay, so this is frequency is given as 2 kHz. So the frequency of working is 2 kHz. So if you see this circuit, what you can understand. So this is a resistor. Here this is a capacitor. So definitely it should be coil in. This is an inductor here. So we have to compensate it. So how to hona hai? So already this particular capacitor network is compensated with the inductive network. So definitely this resistance only should be there. You understand? So definitely it should be balanced with the resistance only. So blindly we can say it's a purely resistive network. It should not have. So if you see Z1 Z4 must be equal to Z2 Z3. So this Z2 Z3 is already balanced. Common sense use karo beta. Z1 Z2, this you take as Z3, you take it as Z4. So if you take this Z2 Z3, Z2 is capacitive network and it is balanced with what? Inductive terms. So it is already balanced ho chuka hai. So here balance hona hai. So Z1 is given as a resistor my dear. So Z1 is resistor means Z4 also be resistor hona hai. So it should be resistor hona hai. So compulsory it should be a pure resistor hona hai. It should not have any j omega terms like that. So blindly you can go for option A. Why? Because इसमें pure resistive network होना है, pure resistive होना है. Very simple common sense use करके आप apply करना है. Or else you have to solve. Or else you have to solve. Solve करके भी हम कर सकते हैं. चलो, let us go for the next question. Yeah, try to answer this question, my dear. एक गेट IIT 2010 का सवाल है. So ये क्वेश्चन देखो, 2010 का सवाल है. The Maxwell bridge shown in the figure is at balance. The parameters of the inductive coil are dash. So if you see this particular circuit, this is what, there is a test coil here. So we can understand by the circuit. First of all, you have to understand. So this is a test coil. Okay. Next comes here a resistor. Next comes here a resistor.
Next comes here a combination of resistor and capacitor. That's it. So आपको पता है R1 क्या होगा. So unknown is R is R2, R3 by R4. So if you see R cannot be have capacitor term. So this is wrong. So R is equal to R4 by R2, R3 ये चेक करना है. And L is equal to R, these both are wrong. So option D नहीं हो सकता है, option B नहीं हो सकता है. So आप चेक कर सकते हैं ना. So this is R1, so this is R, so this is R3, this is R2, so this is R4. So आपको resistor network का compare करो. R into R4 is equal to R2, R3. So R into R4. So R into R4 is equal to R2, R3 हो सकता है. तो यहाँ से आप R को निकाल सकता है, R2 R3 by R4 को निकाल सकता है डायरेक्टली, R4 को निकाल सकते हैं. सो R2 R3 by R4 होना है. तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है. ऐसा कॉमन सेंस यूज करके आप कर सकते हैं. नो नीड टू गो फॉर द एंटायर डेरिवेशन पार्ट और नो नीड टू बाय हार्ट द फॉर्मूलास. इज इट क्लियर माय डियर? Okay, chalo, let us go for the next question. See this question. The bridge method commonly used for finding the mutual inductance. हमको हमारा सिलेबस में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, लेकिन शेयरिंग ब्रिज आपको प्रेजेंट है कैपेसिटेंस मेजरमेंट. सो शेयरिंग ब्रिज आपको कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए है. नेक्स्ट DSRT bridge is also for capacitance measurement. Wien's bridge is for frequency measurement. So obviously habits. So this is a mutual inductance. Please make a note. Okay, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. Heaviside Campbell bridge. ऑप्शन ए इज द राइट. वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है ऑल द पैरामीटर्स. सो बट हैव एन आइडिया. नेक्स्ट, try to answer this question. In the bridge circuit shown, the capacitors are loss free. It balance the value of capacitance C1 क्या है? So if you take this as Z1, if you take this as Z2, if you take this as Z3, this is Z2. If you take this as Z3, if you take this as Z4, तो अब क्या ले सकते हैं? Z1, Z4 is equal to Z2, Z3 ले सकते हैं. So Z1 is this. So this is R1 and this is 1 by j omega C4. This is Z2, 1 by j omega C2, and Z3 is R3. So here the j omega gets cancelled. So this is R3. So हमको क्या चाहिए? C1 चाहिए. So we can take C2 चाहिए, that means this capacitor we need. So R1 is 35 kilo ohms power 3. C4 is 0.1 into 10 power minus 6. And here R3 is 105 kilo ohms. It is 105 into 10 power 3 divided by C2 is this one. Okay. So now what happens? 10 power 3 gets cancelled. Okay. C2 is equal to 105 into 1 into 10 power minus 6 divided by 35. तो आंसर कितना है एक बार चेक कर. .3 microfarads are. The right answer here is
0.3 माइक्रोफैराड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Try to answer this question now. इसका आंसर क्या होता है? Figure shows a balanced AC bridge is exited by a voltage source of fixed frequency. The impedance of the unknown arm is dash. So definitely ये क्या है? देखो, this is Z1, this is Z2. देखो, ये है हमारा Z1, ये है हमारा Z2, ये है हमारा Z3. So this is the Z4. So Z1 Z4 must be equal to Z2 Z3. ध्यान से देखो बेटा. So if you see clearly, so this is resistor. So definitely it should be combination of resistor and inductor, or it can be resistor and capacitor in parallel. So option C हो सकता है. तो इसमें options both है. If R and L in series ना, so this is Maxwell inductance bridge हो सकता है. If R and C parallel ना, it can be Maxwell inductance capacitance bridge भी हो सकता है. Okay, that's it. ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता है. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली स्पीकिंग ये आर एंड सी भी हो सकता है. आर एंड सी भी हो सकता है. हेस ब्रिज. सो हेस ब्रिज में यही चांस है. ओके, चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. इट इज एसी ब्रिज का क्वेश्चन है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
common data for both slides. So a data given as a balanced AC bit shown in the figure as the following values: C1, R2, so this is R1, so this is the R1 here. So R1 is given, C1 is given, R2 is given, C3 is given. So, and what is the question? Question kya hai? The magnitude of impedance is dash ohms. So this is the magnitude of impedance. So what I can do here, I can solve like this. So Z1 Zx is equal to Z2 Z4. So what is the Z1? This is Z1. R1 parallel with J ohms. So R1 by 1 plus J omega R1 C1. R1 into 1 by J omega C1 by R1 plus 1 by J omega C1 into Zx. So what is the Zx? So Zx is this unknown. Next, what is Z2? Z2 is resistor R2. So this is R2 and Z3. This is Z3. That is 1 by J omega C3 by J omega C3. So आपको क्या चाहिए? आपको अननोन इम्पिडेंस चाहिए. सो Zx चाहिए. सो कैसा सॉल्व करना है? सो सिंप्लीफाई करो. Zx इज इक्वल टू R2 by J omega C3 into 1 plus J omega R1 C1 divided by R1. Okay, so सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप ऐसा. आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो, सो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर J ओमेगा से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें तो ये J से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है. तो यहाँ आपने ये J ओमेगा को मल्टीप्लाई करो एंड हियर आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको कुछ वैल्यूज मिलेगा. सो क्या है? R2 का वैल्यू दिया है. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द थिंग्स डन. टेल मी. सो सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है उसका. इसका सिंप्लीफिकेशन करके बताइए. सो ये J से मल्टीप्लाई करो, तो J से मल्टीप्लाई करो तो J इंटू R2 बाई माइनस R1 R3 आएगा. तो प्लस, so this is R2 R1 C1 by 3 R1. तो परफेक्ट आंसर आपको मिलने की चांसेस है इधर. तो Zx का आंसर है, तो दिस इज R2 R1 C1 डिवाइडेड बाय C3 R1 माइनस R2 R3 J R2 by R1 R3
minus j r2 by r1. So please solve this, you will get the answer. Okay, so you will get in the format of jx is equal to a minus jb. So take the magnitude, that is root over a square plus square. So directly we can take the magnitude of this r2 r1 c1 by c3 r1 whole square plus r2 by r1 r3 whole square. That is the answer. Very tough question, एग्जाम में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मेथडोलॉजी फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं. चलो, सो इज आस्किंग द पावर फैक्टर ऑफ एंगल. सो आपको ZX आ गया a प्लस a माइनस JB फॉर्मेट में. सो tan phi यूज कर सकते हैं. tan phi इज इक्वल टू b बाई a अप्लाई करो, दैट्स इट. ये लीड है, लैग नहीं है, दैट मीन्स कैपेसिटिव टाइप है. सो ये भी ऐसा सॉल्व कर सकते हैं आप. This question also you can solve the same way. This question also you can solve in the same way. IIT कानपुर का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो. Find the excitation frequency and the value of resistance R2. So he's asking the excitation frequency F कितना है and R2 कितना है, he's asking. In AC discrete under balanced condition, so the circuit component values are given. So आपको ये Z1 ले सकते हैं. तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? So यूज करो, इंटेलिजेंस यूज करके करो. So Z1 क्या है? Z1 is equal to R1 in series with a capacitor. R1 in series with a capacitor. तो आपने R1 plus 1 by j omega C1 ले सकते हैं. Next Z2 is R2 by 1 plus j omega R2 C2 यूज कर सकते हैं. And Z3 is R3, Z4 is R4. Z3 is R3, Z4 is R4. So these are the values. Okay, so now आपको R1 C1 R2 C2 everything is given, and is asking what R2 value. So is asking the R2 value. So आप निकाल सकते हैं ना, प्रैक्टिस करो. So Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. all AC bridges का प्रॉब्लम्स ऐसे कर सकते हैं. R1 plus 1 by j omega C1 into Z4 is equal to R4. Z2 is R2 by 1 plus j omega R2 C2 into Z3 is equal to R3. Okay, so this is R1 R4 plus R4 by j omega C1. This is R2 R3 by 1 plus j omega R2. I am giving the methodology, you try to solve. Okay. आपको ओमेगा भी पता नहीं है, कैसे करेगा? तो एक काम कर सकते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. R1 R4 j ओमेगा C1 प्लस R4 इज इक्वल टू R2 R3 j ओमेगा C1 डिवाइड बाई 1 प्लस j ओमेगा R2 C2. तो क्या होगा ये क्या होगा? j ओमेगा R1 R4 C1 प्लस R1 is into 1 plus j omega R2 C2 is equal to
R2 R3 j ओमेगा C1 हो जाए। तो एक बार मल्टीप्लाई करो इधर, j ओमेगा R1 R4 C1 j स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर R1 R4 C1 R2 C2। ओके, j ओमेगा R1 R4 C1 j स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर R1 R4 R2 C2 C1 प्लस R1 प्लस j ओमेगा R1 R2 C2 इज इक्वल टू R2 R3 j ओमेगा C1। सो एक काम आ जाएगा उधर, R1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1, so these are the real parts, C1 R2 C2 इज एक्चुअली ये वीन्स ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा वीन्स ब्रिज का कॉन्सेप्ट हो चुका है। सो आप अप्लाई कर सकते इधर, क्या अप्लाई कर सकते, R1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1 R1 R4 C1 R1 R4 C1 R2 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R1 R4 C1 R2 C2, R1 gets cancel, so omega square is equal to 1 by R2 R4 C1 C2। सो आपके पास पूरा वैल्यूज है, आपके पास पूरा वैल्यूज है। R2 का वैल्यू पता नहीं है, यस वी डोंट नो द R2 वैल्यू, सो आपको R2 वैल्यू निकालना है। सो R2 वैल्यू निकालने के लिए आप ये यहाँ j ओमेगा टर्म के पास जा सकते हैं। सो j ओमेगा टर्म्स में क्या क्या है देखो, j ओमेगा टर्म्स को बैलेंस करो, R1 R4 C1 R1 R2 C2 इज इक्वल टू दिस। सो बैलेंस थोड़ा सा लेंथी है, हो सकता है आपको गेट में। सो j ओमेगा कॉमन लियो इधर से, R1 R4 C1, सो दिस इज R1 R4 C1, नेक्स्ट R1 R4 C1 कॉमन लिया, प्लस R1 R2 C2 प्लस R1 R2 C2, so that is a j ओमेगा, मैंने कॉमन लिया R1 R4 C1, एंड इधर j ओमेगा कॉमन लिए तो R2 R3 C1 आएगा, इधर j ओमेगा कॉमन लिए तो R2 R3 C1, so j ओमेगा gets cancel, okay, so R1 R4 C1 plus R1 R2 C2 is equal to R2 R3 C1, so R1 R4 C1 is equal to R2 R3 C1 minus R1 R2 C2. If you take R2 common, so this is R3 C1 minus R2 C2, R1 C2, so R1 R4 C1 divided by R3 C1 minus R1 C2, please check this. So these are the, once you get the R2 substitute here, आपको वैल्यूज निकलेगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन करने की कोशिश करो। Enough for today. Thank you. Try to solve these questions, my dear. Try to solve. If anybody is having any doubts, you can answer here. Anybody doubts here? Just me.
There is no other way of shortcut for this problem. This type of problems have to be solved. Actually, it's a Wien's bridge, but try to answer me this question. Thank you. We'll meet tomorrow session. In tomorrow session, we'll start discussing the measuring instruments. Okay.